the previous video, we have learned what we are studying in class 6, what we are going to study in class 7, that is the medieval history. In this class, what we have read about only the what we read and what you have read. You have read in 6th standard about the history of till 700 AD. But in this class, you have read about or you will read about the history of till starts from 700 AD to till 1700 AD. In this section, like in the previous video, what topics we have covered: cartographer, new and the old terminologies, and the historians and their sources. Now, in this second video, what we have to cover: new social and political groups, region and empire, old and the new religions, and the last topic is thinking about the time and the historical period. In the previous video, we have learned about how people used to make a map of the different types. First is made by the Arabic people, then it's another people who made by the French. Both have a different thinking. And he used to make the Sri Lanka above the India, but actually in the present day or in the modern world, Sri Lanka is the downside of the India. So are the vast difference in that. That particular map is most helping for the helping hand only is helping for the Europeans for where they used to come for the business, for the sailor purpose, or for the traveling purpose in India. And we used to learn as the time passes, when we used to get the coin, when we used to get the information, when we used to get the textual information. On the basis of that, how we come to know that a particular person, particular object is how much old, how much year this particular object is, what kind of information we get, and by this we make a chronology of so many kings, so many kingdoms, and different you can say religion thoughts. And in the further if we go, we come to know that the earlier the people were using only the bar paper, they used to write with the hand, so they use only the manuscript and inscription. But later on, when the time passes, the people started to knowing how we have to use the paper. Then they started the demanding more and more use of the paper. Now, if we see in the current era, now we are using not that much of paper, but still we are using, but not that much of paper. The digital era, there is not that much demand of the paper. So, like in this case, we have learned numerous of things, like how people have changed according to the time passes. So, in this case, we saw about how a particular man is copying or miniaturing a particular text. The textbook is in the big form, then he used to write in the small book in the covered form. So, like what the difficulties they face, how many books they have to write, all these things we have shown or we have read in the previous video. Now, this video with this points we are going to cover it. Starts from the page number 6. New social and the political groups. Like after the time passes, now the people used to make political and the social group. In that, they started making caste and the subcaste. That we are going to learn in detail. The study of the 1,000 year between 700 and 750 in the huge challenge to the historians, largely because of the scale of the narrative and the background of this period or the period means. अगर हम 1000 साल की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है तो 1000 साल की हिस्ट्री को अलग अलग डिवाइड करना, उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और एक टेक्स्ट बुक में डालना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. जैसे इसमें दिए गए 700 से 750 तक. At the different moment in this period, new technology made their appearance, which I already explained. काफी सारे technologies, just like the Persian wheel is in irrigation. You can see that the people use this wheel for the irrigation. Nowadays we are still using, but nowadays we are using machine. Earlier the people were using this wheel as for the irrigation. The spinning wheel is weaving and the 5 arms of the combat. New foods of beverages arrived in the soft continents, potato, corn, chilies, tea and coffee. Means as the time passes हुआ तो उन्होंने spinning wheel बनाया, फिर 5 arms in the sense यानी कि जो हम बोलते हैं बो एंड एरो, इसमें फायर का यूज करते थे किसके लिए, जब वो कहीं लड़ने जाते उसमें काम आता था. न्यू फूड एंड बेवरेजेस के काम आते थे. अराइव इन सफर में पोटैटो है, कॉर्न है, चिली है, टी है, कॉफी है.
Remember that all this innovation, new ideas, means they used to maybe their innovative idea, but they used to have what particular thing they have. Came along with these people who got all their ideas with them as well. As the result was a period of economic and political and social changes. means इसमें सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पे और कल्चरल के तौर पे काफी सारे बदलाव आए. This was also a period of great mobility. Great mobility says people used to move from one place to another in a great mobility. Group of people traveled long distance in the search of opportunity. Means वो लोग इतना लॉन्ग डिस्टेंस इसलिए ट्रैवल करते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिल सके कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सके और क्या हो सके, फेमस हो सके. तो दिस कम्युनिटी हैड इमेंस वेल्थ, द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व फॉर्चून. मींस वो अपनी किस्मत को आजमा दे सके. शायद हम इस पर्टिकुलर नेशन में या पर्टिकुलर जगह से बहुत सारा पैसा कमा सके. One group of people who become important in this period were the Rajput. जो इसमें जो सबसे ज़्यादा important period थे वो थे राजपूत. राजपूत ऐसे थे कंप्लीट से अ ग्रेट वॉरियर, और ऐसे लोग जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं और जिनका एक मोटो था कि वो किसी को धोखा नहीं देते थे. मतलब अगर उन्होंने किसी चीज़ की एक बार या कसम को प्रण ले लिया या कसम खा ली तो उस कसम को नहीं तोड़ते थे. That's why the name derived from the Rajputra, the son of rulers. Between the 18th and 14th century, the term was applied more generally as a group of warriors who claimed as the Kshatriya caste, जिसको हम कहते हैं चार वर्ण हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, राजपूत और Rajputra, which used to come under the caste, or you can say which kind of is called, that is Kshatriya. The term included not just the ruler or chieftains but also the soldiers. इसमें से ruler और chieftains थे और soldiers भी आते थे और commander भी आते थे. Who served in the armies for the different monarchs all over the subcontinent. यानी वो सब continents पे क्या करते थे? Rule करते थे. A clever code of the conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by the gods and the gods. Other groups of the people such as देखो क्षत्रिय और किस को लगा मराठास. मराठास कहाँ पे हुए थे? महाराष्ट्र में. उनको लिए गए. सिख जो कि पंजाब के देखो मिलते उनको भी क्षेत्र में लिए गए. जाट्स जो हरियाणा में देखने को मिलते हैं उनको लिया गया. अहोम्स जो कि दूसरे कंट्रीज है. आपके अहोम्स के बारे में डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें, which I am not going to explain right now about the Ahoms because we are going to read in the next chapter what the Ahoms where they used to come from the temple. तो उनको भी क्षेत्र में डाला गया. Of course, the subclass secretaries also use the opportunity of the age to become the politically important. Means राजा होता था, उसके जो आप कह सकते हो प्रधानमंत्री या फिर उसके जो दरबारी होते थे वो भी एक अपॉर्चुनिटी उठाते थे कि हम भी किसी पर राज कर सके और बहुत ज़्यादा क्या कमा सके, पैसा कमा सके. Throughout this period there was a gradual clearing of forests. फिर इतने सालों में ये ऐसा बहुत हुआ कि फॉरेस्ट को बहुत हद तक क्लीन किया जाएगा. क्यों क्लीन किया जाएगा? फॉर द एग्रीकल्चर. On the change of the faster, more complete in some areas than the other things. Means और बहुत तेजी से फॉरेस्ट को पसंद किया गया कि वो एग्रीकल्चर कर सके, ह्यूमन सेटलमेंट कर सके और नई नई चीज़ें का डेवलपमेंट कर सके. Changed to their habitat, forced many forest dwellers to migrate. Others started taking the land and become the peasant. बहुत से लोगों ने लैंड को खोदना स्टार्ट किया और क्या बन गए? पीजेंट बन गए. The new peasant group gradually began to be influenced by the Russian market, chieftains, priests, monasteries, and the temple. They became the part of large and complex society and were required to pay the tax and offer a goods service to the local lord. अब इनका क्या था? जो ये जो थे इन्होंने जो फॉरेस्ट कट किया, फिर एग्रीकल्चर किया, ये बन गए पीसेंट्स. अब पीसेंट्स क्या करते थे? ये जैसे उन्होंने वो जंगलों से आया, वो इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी यानी जो हमारे तरह के जो सुंदर थे उसके पार्ट बन गए. अब ये लोग जो काम करते थे इनको टैक्स भी पे करना पड़ता था और जिस जगह जो लोग रहते जो उनका हेड होता था उनको इन लोगों को क्या देना पड़ता था? गिफ्ट देना पड़ता था. देन इन दिस केस एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस इन्वॉल्व अमंग द पीपल. अब लोअर ग्रुप में किस तरह का डिफरेंस आने लगे? सोशल एंड सामाजिक तौर पर. एक पॉलिटिकल लॉ मींस द पीपल यूज्ड टू कंसीडर पीपल यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम द अपर कास्ट. They said we are the superior. The people used to belong from the lower caste. They thought that we are the inferior. And if we talk about the status, whether it is these rich or poor, among them also there are the difference between their thinking, their behavior purpose. There are the certain things which they
thought that we are the different. Like in this case, some were just more productive land and other also capital. जो ये peasants है लैंड को बहुत अच्छे से यूज करते थे, एग्रीकल्चर करते थे और कैटल को भी रखते थे एंड सम कंबाइंड आर्टिफिशियल वर्क एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस सीजन. इसमें आर्टिस्ट वर्क भी होता था और एग्रीकल्चर वर्क भी होता था. मींस the peasant used to work in the agriculture. Some of the peasant used to do the painting work or the artisan work, and they used to do the work of the rearing of the animals. As the society became more different, people were grouped into the जाति. अब सोसाइटी जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो क्या हो गए जाति और सब कास्ट हो गए. रैंक ऑन द रैंक और नॉट फिक्स परमानेंटली. और फिर उनको उनके बैकग्राउंड यानी वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन यानी उनकी कौन सी जॉब है, फिर उनको एक रैंक दिया जाने लग गया. जैसे कि ऑन द मेरिट ऑफ द पावर, जिसके पास जैसे पावर उसके बेसिस पर उसको जाति ये सब कास्ट में डिवाइड कर दिया गया. इन्फ्लुएंस द रिसोर्स कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ जाति. द स्टेट ऑफ द सेम जाति विल बी वर फ्रॉम एरिया टू एरिया. यानी जो इंसान एक जाति वैसे तो काम करता था उसको उसी जाति का था और एरिया का टू एरिया यानी जो डिफरेंट एरियाज होते थे उससे बिलोंग करते थे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक कि जो कोई इंसान काम करता था उसको पहले के टाइम में ये होता था अगर इफ यू बिलोंग टू द ब्राह्मण्स और लाइक इफ योर फादर इज ब्राह्मण यू हैव टू डू द वर्क ऑफ ब्राह्मण्स. इफ योर फादर इज कमांडर इन क्षत्रिय सो यू हैव टू डू द वर्क इन द क्षत्रिय कैटेगरी. इफ योर फादर बिलोंग्स फ्रॉम द वैश्य so you have to do the work in the Vaishya. If your father is belong from the Dalit or you can from the lower caste, so you have to do that kind of work only, not other work you can do. In this case, the jatis are divided according to the area. Like if you are doing making of the pot, so you belong to that category, you belong from that jati. So these are the things. It's slowly gradually divided into different periods according to your area, according to your occupation, and according to from where or which place you are come from. Now in the next, the jatis frame their own rules. जाति अपने खुद के rules बनाती थी या खुद के regulations बनाती थी to manage the conduct of their members. This regulation were enforced by assembly of leaders. इसमें क्या होता था जाति में assembly होती थी leaders की to discuss the some area of जाति like पंचायत. जैसे कि पंचायत होती है but जाति were also required to follow the rules of their villages. और जाति को जो अपने assemblies बनाते थे जिसमें सारे लोग आगे इकट्ठे होते थे वो अपने खुद के रूल से रेगुलेशंस बनाते थे और ये अपने विलेज में क्या करते थे रूल करते थे यानी एक काइंड ऑफ रूल. Several villages were governed by the chieftains. Several villages थे इसके बाद governed किए chieftains से. Together they were only one small unit of state. Together वो क्या मिलके बनाते थे एक small unit of state, region and empire. Now for me what is it? How the region become how the empire become? First you have to see this map of India where the different you can see the downside the names were given which we like this is the map we're talking about the medieval history how the map is what is the name of the particular place. We talk about this the province of Delhi Sultanate during Muhammad Tughlaq region according to the Egyptian source Malaz ke Abasar ki Malak wal Amas of शिवबुद्दीन उमरैन यानी सॉरी ये जो मैप है ये दिल्ली के बारे में भी बताया दिल्ली के प्रोविंस के बारे में बताता है जो मोहम्मद तुगलक के टाइम का और एक इजिप्ट जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है अफ्रीका में है. तो ये सारी चीजें बताई गई किस तरह से जैसे कि इसमें लास्ट टाइम लाइक चोलास तुगलक चोलास के बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे तुगलक के बारे में डिटेल चैप्टर 3 में पढ़ोगे मुगल्स के बारे में डिटेल में आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे. जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि फर्स्ट चैप्टर आपको ये बताता है इन दिस होल बुक इन दिस होल ईयर इन दिस होल 7th क्लास what you are going to read. So about Cholas you will read in chapter 2, about the Tughluks you will read in detail in chapter 3. About the Mughals which I think you have a favorite topic which you are going to read in chapter 4 encompass the many regions. A Sanskrit that is Prashati see the chapter 2 for an example of a Prashati praising the Delhi Sultanate Ghiyasuddin Balban that is he born in 1266 or he died in 1287. It's when he was the ruler of the vast empire that stretched from Bengal. यानी उसने बहुत बड़ा काफी लंबे समय तक रूल किया उसको कहाँ तक स्ट्रेच किया गया था बंगाल तक जिसको हम लोग बोला ईस्टर्न कश्मीर सॉरी गजनी
or Ganja in Afghanistan in the past that include all the South India that is there. यानी और ये हमारा वेस्ट बंगाल वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं गोंडा। देन अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान इस साइड है हमारा, इसको हम बोलते हैं एंड द प्रीवियस वी आर टॉकिंग अबाउट medieval history we used to call it as the Ganja, this one is the Ganja। और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें जिसको हम रियल इंडियंस भी बोलते हैं उसको बोला जाता है द्रविडियंस और द्रविड़ा। People of different regions like Goda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fell before his army। इन सब की क्या थी, अलग अलग आर्मीज थी। Historians regard this as an extended chain of conquest। At the same time, they tried to understand why the rulers kept claiming to have control of different parts of the subcontinent। Different rulers और different times में तो उन्होंने इन सब कॉन्टिनेंट्स को अपने राज्य चलाया कि हमारा यहाँ पे रूल है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो द्रविडियंस का था, अफगानिस्तान का था वो गोंडा का था, और अगर इस तरह की बात करें कंप्लीट वाज जो वेस्ट बंगाल इसका नाम गाजा का था ना। बात करते हैं लैंग्वेज एंड रीजन, डिफरेंट रीजन हैव द डिफरेंट लैंग्वेज। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया इन द medieval history time and the present time, according to the state they have languages like this। The Amrit Khushro has written in his poem in 1380 that a different language in every region of the world, Sindhi, which is the present in Pakistan, Lahori, Kashmiri, Davas Samudri in the southern Karnataka, Telangana in Andhra Pradesh, Ujjain in Gujarat, Mabari in the Tamil Nadu, Gauri in Dhaka, Moti in the eastern Uttar Pradesh, and the Hindavi in the area around Delhi, which Amrit Khushro has written. The particular area is depend on their languages. Like these are all the languages. Earlier it was there, and today it also exists. Amrit Khushro went to explain that is the contrast to the language. This was the Sanskrit, which did not belong to the Agni region. Yes, Sanskrit did not belong to the Agni region because earlier the Sanskrit used to speak, or you may say the spoken by the Brahmins only। They used to communicate or they used to interact with each other। They do not used to interact with the other person or the common people कि what the संस्कृत है। पहले के टाइम में क्या होता था, संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण लोग ही बोलते थे और वो आपस में ही कम्युनिकेट करते थे। जो कोई आम इंसान है, आम आदमी होता था वो संस्कृत में बात नहीं करते थे। इससे संस्कृत का इतना ज़्यादा है सबको विख्यात या प्रसिद्धि या फिर फेमस नहीं हो पाया। That is true that Sanskrit is the oldest language of the world, not India, but common people did not know how to speak this Sanskrit language. Only the Brahmin used to speak this language। Amrit Khushro went to explain the contrast of this language। There was a Sanskrit which did not belong to any region. It was an old language and the common people do not know it, only the Brahmins do, which I already explained this। Now, by 700 many regions already possess a distinct geographical dimension। Yes, till the 700 AD and after that, different region have different geographical dimension। Means हर जगह का अलग अलग geography था। जैसे कि somewhere you find the desert, somewhere you find the mountains, somewhere you find the plateau, somewhere you find the oceans, somewhere you find a river। All the regions have the different climatic condition। If you talk about the Gujarat, it's like a kind of a very hot place or the hot region। But you will learn more about this in chapter 9। They were also associated with specific ruling dynasty। There were considered conflict between the state, यानी कि डायनेस्टी के बीच लड़ाई होती रही, स्टेट के बीच में लड़ाई होती रही। Occasionally dynasty like Cholas, Khiljis, Tughlaq, Mughals were able to build the empire that was their parent region, spanning the diversity। ये जो आप पढ़ोगे चोलास के बारे में, खिलजी के बारे में, तुगलक के बारे में, मुगल्स के बारे में, इस बुक में इन्होंने मोस्ट ऑफ लाइक पूरे इंडिया पे राज किया। कुछ पार्ट को छोड़ के मोस्ट ऑफ पार्ट के इंडिया पे इन्होंने राज किया था। वो आप सब कुछ किसमें पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। नॉट ऑल द एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। ये भी ट्रुथ है कि ये जो जितने भी डायनेस्टी हुए ना इक्वली ना था, बहुत से कुछ स्टेबल थे, बहुत से कुछ स्टेबल नहीं थे। यानी कुछ लोगों ने बहुत समय तक राज किया, कुछ लोगों ने बहुत समय तक राज नहीं किया। नाउ when the Mughal Empire declared the 18th century, it led to the remains the regional state, but here the imperial pan-British rule had altered the character region. Across the most of the subcontinent region were left with the legacy of the big and small state. The rule over the Andhras was apparent in the emergence of many distinct traditions, the rulings of the governors, and the management of the economy.
लेट कल्चर एंड लैंग्वेज। जैसे जैसे टाइम पासिस होते गए, मुगल्स ने डिफरेंट रीजन पर रूल किया, फिर उन्होंने अपना इकोनॉमिक, अपना पॉलिटिकल, अपना सोशल एजेंडास बनाए, फिर उसको जो है डेवलप किया और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आई। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे बिग स्टेट में से स्मॉल स्टेट, छोटे छोटे रूलर्स वहाँ पर रूल करने लग गए। फिर वहाँ पे मैनी डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन इन द नेम्स ऑफ गवर्नेंस एंड मैनी इकोनॉमी लेट कल्चर एंड लैंग्वेज। यानी जो जो रूलर बाहर से आए उन्होंने एक सोशल स्ट्रक्चर बनाया, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाया, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया। फिर उसके बाद अलग अलग जो लोग थे उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज बोलना सीखी। फिर उन्होंने उनके वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस, काफ़ी सारी चीज़ें बनती। ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। when they used to come, the Khiljis, when they used to come, Tughlaqs, when they used to come, Mughals, when the number of the people or number of the rulers who used to take in India, they used to change time to time. This sense, through the thousands of the year, between 700 and 750, character of different region did not grow as a region. यानी कोई भी पर्टिकुलर स्टेट अकेले ग्रो नहीं किया है, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स आए, उन्होंने अपनी तरह से उसको चेंज करने की कोशिश की। दिस रीजन felt the impact the larger pan religion force of integration without ever quite losing their history, old and the new religion. Now we are going to this topic, old and the new religion. Like the thousand of year history that we explore with a major development in the religious tradition, people believe in the divine was sometimes taken personal. यानी हम हजारों साल से हजारों सालों की अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि धर्मों में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए। कुछ लोग अपने पर्सनल बिलीफ से सोचते हैं, कोई धर्म को आता है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ बताता है। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, वो भी हम इस बुक में पढ़ेंगे, जिसमें भक्ति मूवमेंट आएगा, जिसमें मुगल्स साइड, जिसमें रहीम के बारे में आएगा, जिसमें मोहम्मद के बारे में आएगा, जिसमें बुद्धा के बारे में आएगा, जिसमें कबीर के बारे में आएगा, जिसमें गुरु नानक के बारे में। The different religious we are going to study in this particular book. So this we all have mentioned in this. It was during this period the important changes were occurred when it was called and it was started. Important changes आए जो कि आप हिंदुस्तान में बोलते हैं, because in our India we are having a different religion and we are respecting every religion, that any of the religion you can opt it if you want to opt it out. This includes the worship of new deities. इसमें क्या include हुआ कि नए deities, यानी नए जो मूर्ति का बनती थी, हम उसकी पूजा करते थे। Then the construction of temple by royalty, growing the importance of the Brahmins, जैसे कि यहाँ बड़े बड़े राजा थे जो टेम्पल्स बनवाते थे, ब्राह्मण जो प्रीस्ट थे जो डोमिनिक ग्रुप सोसाइटी में काम करते थे, नॉलेज ऑफ संस्कृत की नॉलेज और द ऑन द ब्राह्मण्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। ब्राह्मण्स जो थे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। The dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers such as the prestige. ये आपको ध्यान रखना होगा, पहले के टाइम पे जो राजा थे वो मोस्ट ऑफ टेम्पल्स बनवाते थे, इसलिए बनवाते थे जब वो कोई राज को, यानी कि कोई पर्टिकुलर एरियाज में वो जीत लेते थे तो उसके वो अपने जीत की कोशिश में टेम्पल्स बनवाते थे। पहले के टाइम में ब्राह्मण्स को या जो पंडित होते, आज के टाइम में भी दिया जाता है, पहले के टाइम में जो ब्राह्मण से पंडित होते उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी और उनको कास्ट में को या फिर को कि उनको सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाता था। और उन ब्राह्मण्स के भी और उन पंडितों के उनके पैटर्न्स होते थे। पैटर्न्स इन द सेंस दैट इन्फ्लुएंस द व्यक्ति इंडिविजुअल सपोर्ट एनी अदर पर्सन आर्टिस्ट क्राफ्ट और गवर्नमेंट और नोबल। पैटर्न्स उसको कहा जाता है एक ऐसा पैसे वाला आदमी जिसको सपोर्ट में आर्टिस्ट हो, एक क्राफ्ट पर्सन हो, एक लर्न मैन हो और एक क्या हो, नोबल हो, जिसको संस्कृत बहुत अच्छे से आती है। One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti, which I already explained about this. That of the level of beauty and all this thing, you will go to learn from the chapters about that. That what kind of things we need to learn. What is bhakti, about the Muhammad and all this thing. Now come towards the last topic of this chapter, thinking about the time in this particular period. The student do not see the time just the passing of the hours, day or year as a clock of calendar. Historians जो ऐसे भी देखते हैं कि समय जो निकलता जा रहा है, डेज निकलते जा रहे हैं, साल बार साल निकलते जा रहे हैं, क्लॉक ऑफ कैलेंडर से टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट द चेंज इन सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हिस्ट्री में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड द साइकोलॉजिकल काफ़ी सारे चेंजेस आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि
पर्टिकुलर एक चीज हो गया वो परमानेंट हो गया, टाइम टू टाइम डिफरेंस होता है। अगर हम आज की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो हम लोग आज देखते हैं कि कितने सारे इन्वेंशन होते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं। तो लाइक लाइफ इज लाइक a changes, it's not like permanent and we make a particular thing like this is the only thing which is permanent. Now I don't want to change, it's not going to be possible. We have to change, we have to see the changes and we have to accept the changes. In the persistent and transformation of ideas and beliefs, the study of the time is made somewhat easier by the divided class into the large segment period that possess the shape characters. यह एक प्रूफ है कि अच्छा है कि हिस्ट्री को डिवाइड करने का एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में अगर पूरी हिस्ट्री को एक साथ पढ़ा जाए तो कितना ज़्यादा बॉर्डर और कितनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो गई। So it's very good we have divided the history into this three period, but in this book we are going to learn we have divided the history like this in this medieval history, that is Hindu, Muslim and the British. We have divided the history in these three categories. Like if we talk about the British, we will go to learn in the class 8, that is in the modern history. But in this book, you will go to read about the different religion, different dynasties, different rulers, different region, different empires, different kingdoms, different dynasties. All these things you are going to learn in this chapter. In the middle of the 19th century, British history divided history. I already explained this. There are three Hindu, Muslim, and British, which you are going to learn in this. So, like in this chapter, what we covered it until now, that this is the first chapter which used to state that whole year what things you are going to learn. The first thing is that how the graph, how the maps used to make, what type of king they used to come, and how much time they used to live. We are going to learning detail like the Tughlaqs, like the Khiljis, like the Mughals. Then we are going to learn more about the different religions, the Bhakti movement, about the Prophet Muhammad that used to come, that how they made the Sia Sunni, how the Indians used their religious thing. Then we talk about the Sikhism, how the Sikh people used to worship, how the Buddha, how the Jainism they used to worship. We are going to learn in this chapter. Then how the people used to make the tapas, the different miniatures, the different stones like from Paleolithic to Neolithic and Mesolithic. We are going to learn in this chapter. Now, till only two, that Paleolithic and the Mesolithic we are going to learn, not a Neolithic. Only two storages we are going to learn in this book. Then we are going to learn how the people used to get the information from the particular object, just like the coin. Then how they used to make the dictates, how they used to make the texture, how they used to make the different tapas with the different stones, then different designs. Then we come to know how they use of the paper, how they use of some people the technology as the time passes. Then we are going to learn about how the people, like if they used to make the history, the compilation way in the sense, अगर history को एक साथ रख दिया जाता है, is it possible we can learn in the one video? It's very good that we divided the history into three periods. When the British used to came in India, they used to divide the history into three periods, like Hindu, Muslim, and British. Then we come to know what the particular thing is going to done by this particular people. So by that we can get the deep knowledge of the particular people, like what the Hindus had did, what the Muslims had did, what the British had did in India. So history we divided there. Then the 1000 old history we are going to read in this book, in this video. So these are the things which we have covered in this chapter. In the previous video and in this second video, that the 1000 old year history we are going to read. Then I used to learn in the second video I what points I covered in new social and political rules. That the people used to came in India. After time passes, the number of people have set up a new region in which they used to set up the political agenda, the social agenda, their cultural agenda. They used to learn their new languages, their dressing sense, their behavior changes. All the things we go to learn in this chapter. Then we covered the region and the empire. Then we covered old and new religion. Then we have covered the thinking about time and the historical period. So these are the certain things which we are going to cover with this. So you have to keep this in mind that this is the medieval history. In this book we are going to learn the 1000-year-old history and numerous of the kingdoms, the dynasty, the religion,
There are different kings, there are empires. We're going to learn in this book. I hope you like this video. Thank you.